मोहम्मद अजहर कैसे हैं आप? Good. Life can be good. We shall start, sir. Thank you very much for taking out time and connecting with me. Again, I always give everybody a brief interview of what the thought behind the show is. मैंने बहुत rant कर लिया, बहुत चीखों पुकार कर ली ads के बारे में, मैं करता रहूँगा. That is who I am. But I wanted to connect with agency professionals and wanted to talk to them and wanted them to share their story and their knowledge with the people on the page. Rants के अलावा कुछ और भी लोगों को मिले. Sir, I will start. I will request कि आप मुझे अपना एक थोड़ा सा brief introduction दे दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि सर आए हैं. I'll try to be as brief as possible. तो simple सा solution ये है, हर घात की एजेंसी का पानी पिया है, थोड़ा मुंह फट हूँ और ब्रांड्स के साथ काम किया है, लोकली, इंटरनेशनली, रीजनली क्लाइंट्स के साथ काम किया है. अपनी एजेंसी पिछले 1 साल से चला रहा हूँ और वी आर पोजिशनिंग अवरसेल्व्स एज अ स्ट्रेटेजिक लेड एजेंसी बाय द नेम मैडवर्टाइजिंग, जो कि एक मैगजीन के नाम पे स्टार्ट हुई थी. हमें काफी रेजिस्टेंस मिली शुरू में ऑन द मैगजीन बिकॉज हमने उठाने से मना कर दिया था. हमने कहा था जो लिखेंगे सच लिखेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे. कुछ उस चीज की मैनिपुलेशन में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई ताकि हमें झूठा करार दिया जाए. लेकिन यह है कि सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कर रहे हैं. बट एडवर्टाइजिंग जो कि खून में थी, बीच में पहले भी छोड़ के कोशिश किया कि कुछ और कर लें, लेकिन इतने बोर हुए कि वापस एडवर्टाइजिंग में आ गए. सो इसका साथ नहीं छोड़ना. और अभी एडवर्टाइजिंग का जो एजेंसी विंग है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने स्ट्रेटेजिक लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल में काफी ग्रो कर गई है, from local client to international clients. So, I mean, God, Allah has been kind so far, alhamdulillah. Sir, we had 2 topics of discussion. पहला जो हमारा point है, that is the impact of creative-led versus strategy-led agencies. इसमें मेरा जो humble opinion है, I'll start with that because I know this will trigger a lot of people saying, "KG, whatever I'm saying is shit." But let the shit be heard by the people for the people. By the way, the same motto that I use for Khalid Alvi Marketing Next as well, since you know I'm one of the admins, and हमारा belief बहुत simple है कि अगर आप समझते हैं कि Khalid Alvi पे content shit है, तो it's because you are the one who is putting the content, not us. So it's for the people by the people, yeah. Anyways, so creative agencies हमारे golden 80s का 70s का जो time था जिसमें हमने बहुत मजे के concept बनाए and अच्छे ad बनाए. Unfortunately उस वक्त global perspective नहीं था और हम इंडिया के एड्स नहीं देखते थे, हमें बाहर के एड्स का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जो भी होता था अच्छा होता. That gave rise to the power of creative director, which is okay, inevitably a possible act that is going to happen because creative people are more prone to understanding the customer than a client service person जो कि business mindset पे आता है और business mindset के साथ साथ eventually they became paper pushers. तो client service के लिए बहुत simple सी एक terminology use भी होती है. And that brought a rise of creative agencies in Pakistan to the point कि आपको design houses, creative agencies ये बहुत ज़्यादा मिलेंगी और existing agencies के अंदर जो strategy department थे वो आहिस्ता limited होते चले गए with their scopes. दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि जो स्ट्रेटेजी का मैनेजर आता था वो 2-3 साल काम करके किसी और कंपनी में ब्रांड मैनेजर बन जाता था. तो एवरीबॉडी वाज लाइक, व्हाट द हेल, व्हाई शुड वी हायर देम? सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग interesting vacuum of not having a strategic department in the agencies whatsoever. I think hardly Ogilvy has it, Saatchi has it, probably शायद लो Molan Rue के पास होगा, that's it. I don't think so. और किसी local agency का Adcom of course has it as well, yeah. So बड़ी agencies के पास तो definitely strategy का बंदा होगा, लेकिन other than बड़ी agencies जो आपकी जो medium mid level small medium enterprises है, किसी agency के पास strategy की कोई कहानी नहीं है. Everybody goes with creative and everybody just wants to sell how to make the commercial or their design strength उनकी कितनी strong. अब इस पूरी creative hype के चक्कर में जो सबसे बड़ा disadvantage strategy की वजह से है वो ये आया कि इस पूरे टाइम में जो रीजनल एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट था, इंडिया वाज वेरी स्मार्ट एंड आई मस्ट गिव द क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज ड्यू. दे प्लेड दिस ऑन द रीजनल लेवल एंड सडनली दे started getting more business than us.
in Pakistan, there are only two agencies which handle regional communication. I think Ogilvy and Saatchi are the only two agencies which handle that. Other than that, I don't know if any agency has regions handled. Ogilvy handles Mondelez, I think 26 countries को handle करती है. इसी तरह साची जो है वो PNG में कोई तकरीबन 12-15 countries को handle कर रही है. That kind of communication is completely gone. The business is gone because of that. हम एक ऐड बनाते हैं लाल रंग का, उसमें माँ होती है, माँ के साथ उसका बेटा आता है, वो अमेरिका से आ जाता है तो वो खुश हो जाती है. एक सीन आता है जिसमें शादी हो रही होती है, एक सीन आता है जिसमें बहन जो है भाई के साथ बात कर रही होती है, एक सीन आता है जिसमें बाप बेटे के साथ कम्युनिकेशन करता है. दिस इज ब्लडी टोन ऑफ 80% of our ads, 20% जो बीच में कभी अच्छे आ भी जाते हैं, but this is the tone, and that is what is putting us to a point where our creative stagnancy is coming because we are strategically dumb. We're strategic idiots. And in my opinion, the biggest gap of strategic agency versus the creative agency is that creative agencies have abandoned strategy whatsoever. हमारी इंडस्ट्री में क्रिएटिव्स हैं ऐसे जो पहले कॉन्सेप्ट सोचते हैं और फिर बोलते हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना दो, which is another stupid shit. And I had actually fights with such creative people that I would love to take names, but रहने दें. We literally had fights on that. कि नहीं ये मैंने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट सोच लिया, इसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊं. मैंने कहा, are you idiot? You are saying कि जी जो मेरा थॉट है वही कंज्यूमर का थॉट है. That is the shittiest statement that I've heard in my life. Sorry, I'll give you my experience as well, and this is just on the point where you said that working with creatives who used to say कि यार मैंने idea बना ला, strategy वाले से cost to presentation बना ला. And picking up from what you have said, the reviews that I write, one of the major points that I always bitch about is the fact that there is no insight. And whenever मैं जिन ads की तारीफ करता हूँ, वो insight पे usually based होते हैं. And I am a big endorser of strategy, and I feel कि जब तक आपका देखिए मैं मजाक इस बात को उड़ाता हूँ कि creativity, I get it, it's not everybody's cup of tea, but creative होना आसान है. Creative होना on a strategy is different and difficult. So you have to make your concepts and your ideas based on a strategy, on an insight, understanding your consumer. आपका strategy वाला जो अच्छी agencies हैं, आपने नाम लिया Ogilvy का, yes, साची में भी है. BBDO has a very good strategy department. So all good communications, locally जिनका आप नाम लेते हैं, they are based on some strategy or the other. You can make 10 crore का ad, 20 crore का ad, you can use any Tom, Dick and Harry celebrity, but unless or until your communication and your idea is based on an insight and a strategy, तब तक वो चलेगा, यहाँ से 10 मिनट जाएगा, उसके बाद गिर जाएगा. और कल को it will be yet another ad with the celebrity in it, and that's about it. And that is one of the biggest problem that our industry has. So yes, Sabha Kamar wala ad. I mean, she is a brilliant actor. I am thoroughly impressed by her shows and the content that she creates on the social issues. But that ad was utter shit. Like I didn't even get pissed at that point of time. I just laughed really hard when I saw the ad. I laughed really hard. And कौन है brand manager? इसकी कितनी बड़ी ठरक है जो यहाँ पे लिखी है. I was laughing my head off on that. मुझे बताएं दानिश भाई कि how do we change this? How do we make the agencies understand? And how do we make the client also understand? But strategy is the only thing that will make your brand a resonate with the consumer and long run में उसका feature होगा. क्या करें इसके बारे में? यार स्टेप बड़ा सिंपल है लेकिन वो ट्रिगर करता है बहुत सारी चीजों को. When I started my career, I started from the military brigade, in the agency of all the agencies in Pakistan, that is Prestige Communications. Although I left the agency in a very bad note, but I still respect Jamal Mead the most in my professional life because Jamal taught us the basics that we still in these 16, 17 years of my advertising, I'm still implementing those, and I still respect him from the bottom of my heart. He said that client service in person should be your business strategic partner as well, and that's actually not a rocket science. आप अपने क्लाइंट को क्लाइंट ना समझें, आप अपने क्लाइंट को बिजनेस पार्टनर समझें और आप उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझें और उसके हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी बताएं. हम हंस कर जाते हैं, हमारे क्लाइंट सर्विस का काम है ब्रीफ लेके आना, क्रिएटिव को देना. वो लिटरली होता है, ये ब्रीफ लिया, ये क्रिएटिव को दिया, ये क्रिएटिव से उसका विजुअल उठाया, ये उठा के क्लाइंट को दे दिया. आपने आप चाहे उनके क्लाइंट की फील्ड में जाएं,
उनकी कंज्यूमर को पकड़ें, उनके शॉप ओनर्स को पकड़े कि भाई वो रिटेल में बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है, ट्रेड मार्केटिंग कैसे हो रही है, कस्टमर का ओपिनियन क्या है, कस्टमर आपकी कम्युनिकेशन को तो अलग देख रहा है, प्रोडक्ट के बारे में वो क्या कहता है, आपकी प्रोडक्ट का, इट्स वेरी क्रिटिकल टू नो व्हाट योर प्रोडक्ट इज मेड ऑफ. देयर वाज सरप्राइजिंगली डव की लॉन्च हो रही थी और उस वक्त हमारे ब्रांड मैनेजर ने लिटरली हमें बताया था कि कौन सा मटेरियल कौन से मुल्क से आ रहा है, थाईलैंड से कौन सा मटेरियल आ रहा है, दुबई से कौन सा मटेरियल आ रहा है, सो दैट पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से वी क्रिएट द बेस्ट बार ऑफ सोप इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उसकी एफिकेसी प्रॉपर रहे. और ये यूनिलीवर की इनसिक्योरिटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टोबैको की कभी इनसिक्योरिटी नहीं रही. They teach their agencies in order to make sure that their professionals become. So it's a hand-in-hand relationship where the brands have to be open about the fact कि हमारी brand में क्या-क्या है, और agencies have to be forthcoming in order to learn that thing in order to make sure कि आप जो भी brand में implement कर रहे हैं उसी तरह कर रहे हैं. Right now we launched a face mask brand on Madvertising, और उसमें सबसे पहला जो understanding का session था, my design head and my strategic director and my partner as well, we sat down and we asked them आपके face mask के materials किस चीज के हैं, उसकी क्या configuration है, why 4 layer, why 5 layer, why air loops are like this. So we asked them each and every idiotic and dumb question in order to make sure कि जब हम customer को communication बना के दें तो उसमें वो सारे aspect include हुए हों. So you have to come up with that kind of questions. You have to ask them इसका source material क्या है, पैकेजिंग किस तरह हो रही है, एंड सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का उसका कितना है, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड. आपका एजेंसी का बंदा कभी ये सवाल नहीं करता और ना आपका ब्रांड मैनेजर उसको ये जवाब देने की कोशिश करता. एंड इफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक. स्ट्रेटजी का फिर पर्सनली आप पूरा अगर डिपार्टमेंट हायर करते हो तो मेक श्योर कि व्हेनेवर द क्लाइंट सर्विस पर्सन इज गोइंग टू अ मीटिंग विद द क्लाइंट, द स्ट्रेटजी पर्सन हैज टू बी देयर. द ब्रीफ that is made by the person, it's the strategy person who makes the brief, sits with the client service person, discusses it properly and says ye client ki need ke hisab se business purpose ko fulfill kar raha hai ki nahi kar raha. So it requires a lot of coordination, and that is the problem that we have. We don't have that coordination. हमारी गिनती के strategies हैं, बहुत चीते strategists हैं. Ogilvy की जो head of strategy है, she's fantastic. I've worked with her. Hats off to her. The way she works, she puts her 200% to it. Blitz की advertising के जो strategy के former head होता था, that guy was brilliant. These guys have done their role. Unfortunately, problem वही है कि हम. Can you take names as well, the strategy people? Yeah, Zahra Ali from Ogilvy was there. She's fantastic in her work. Munawar Jamal from Blitz was there. I think he उसने disheart होके agency world छोड़ा है. So, but he's brilliant. He's a good guy. These are good people that we need to keep and we need to retain in this industry for the betterment of our industries as well. Yeah. इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा जो मैंने कही थी, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, यहाँ मैं डेफिनेटली नाम नहीं लूंगा. उन्होंने 2 ऐड बनाए, दोनों ऐड लाल रंग के थे. तो दोनों ऐड अगर आप लिटरली बंदे को माइक वो स्पीकर ऑफ कर दें तो आपको ऐसे लगेगा कि आप 2 लाल रंग के ऐड दिख रहे हैं और शायद वो एक ही ऐड है जो चला और खत्म हो गया. लिटरली मैंने ब्रांडिंग हटाई है और मैंने वो दोनों ऐड चला दिया. मतलब मुझे बताओ कौन सा ऐड किस चीज का है, एंड पीपल कुड नॉट टेल. हमारा सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट ये हो गया कि हम कमरे में बैठते हैं और सोचते हैं एक घर में एक माँ होगी, उसका बच्चा होगा, उसका शौहर होगा, उसकी बेटी होगी, और बस वो ऐसे सोचते होंगे, वो ये सोचते होंगे, वो अपनी ही सोच को हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं. लाइक यू सेड KAMN के ऊपर, उसके ऊपर ऐड पे जो कमेंट आता था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड AO लिखा हुआ था. डूड, AO इज नॉट फॉर यू. टारगेट ऑडियंस आपकी 80% जो कमेंट भी कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि वो अपने आप को उस ऐड का पार्ट समझते हैं, अगर अपने आप को कस्टमर समझ के नहीं सोचते. यू आर सेइंग? Can you give me 5 to 7 minutes? Sure. I need to change my laptop. This is fine. Give me like 5 to 7 minutes. मैं इसका setup भी call back करता हूँ. No problem. So we had started off the second question, which was the disconnect of agency and consumer, and this follows from our previous discussion. So let's talk about that. The reason, in my personal opinion, I very, very strongly consider this, that our agencies are disconnected because we love to come up with the idea with assumptions where the customer is just an arm length away. We are still assuming a lot of things and doing it.
सबसे बड़ी assumption जो हमारी है वो ये है कि जी consumer idiot होता है, ये एक सबसे बड़ी assumption है, इसलिए हम खुद अपनी मर्जी से एक हैप्पी फैमिली सोच लेते हैं और फौरन उस पर कॉन्सेप्ट बना देते हैं, जो कि फिर एड में दिखता है। 21 साल की लड़की होती है और उसकी 7 साल की बेटी होती है, बाज़ औक़ात जिसको वो 31 साल का शो करने की कोशिश करते हैं, दे फॉरगेट दैट चाइल्ड मैरिज, पीडोफिलिया, एवरीथिंग कम्स इन इट, और वो नहीं उसको समझ पा रहे। दे जस्ट वांट टू हैव हैप्पी फेसेस, नॉट ओरिजिनलिटी, व्हिच इंडिया डज शो इट। बहुत उनके कॉन्सेप्ट इस मामले में स्ट्रांग होते हैं। हम सेफ बहुत प्ले करते हैं, एडवर्टाइजिंग में सेफ्टी नहीं समझ में आती। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वर टॉट एडवर्टाइजिंग, द कॉन्सेप्ट वाज इट्स brand manager's job to think safe, your job is to go wild, then there will be a check of safety and sanity, and that combination will bring a creative concept to people which is wild a bit and safe a bit, but you know, a proposition which is going to go, at times you have to go wild. Agar coca-cola coke side of life lekar nahi aata, तो वो सेफ प्ले करते करते वही करता, अपने फिज पे खेलता रहता, बोलता जी हाँ जी बहुत अच्छा ड्रिंक है, लेकिन नहीं, दे हैड टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कस्टमर उनका जो है उनसे लॉयल रहे। हम कम्युनिकेशंस बहुत सेफ खेलते हैं, और हमारी वही सिचुएशन है, माँ बेटे के साथ है, वो बेटा अमेरिका में है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो कि इधर उधर है, यार देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। कॉन्सेप्ट्स निकालो तो सही, कहीं ना कहीं से कोई मजे की चीज लेकर आओ तो सही, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या हो रहा है। I don't remember the brand because there was a concept जिसमें वो पता है, वो एक एक चीज का बता रहा था कि मेरी प्लेट में इस तरह रखो, इस तरह नहीं रखो, इस तरह रखो, इस तरह नहीं रखो। तो उन्होंने कहा था कि भाई इनके कीड़े का इलाज नहीं है, लेकिन बाकी सारी बीमारियों के ऊपर वो I think spray था, something like that. It was a brilliant ad, and it was a Pakistani made ad. The insight was very simple that you know कुछ कीड़े नहीं मारे जा सकते, but all in all बाकी सारी चीजों पे काम हो सकता है। We have to come up with the wild concepts. My question is, and मैं हर एक से पूछता हूँ that who will lead this fight? The fight of making the brands understand that they need to do good, creative, different work based on strategy to be memorable. आपकी बातें जो है मैं समझ रहा हूँ, because these are the values that now I feel were old school advertising. और जब मैं old school advertising की बात करता हूँ, मैं करता हूँ कि that when you got down and got your hands dirty, I feel that people have stopped doing that. Who ये fight कौन lead करेगा? Yeah, my first opinion will be us, the advertising agencies. We need to stand up and you know stop fighting on petty financial issues. Yes, money is important. There is no denial. Money secondary है ना, पैसे कमाने के लिए बंदा काम कर रहा है, पैशन होता तो बंदा पैसे ही ना लेता। मसला ये कि ये वाली चीज ज्यादा ड्राइव कर गई है, पैशन पीछे रख दिया गया है, पैसे आगे रख दिए गए। तो आप पैसे को देखो, मैं मना नहीं करूंगा यार, आई एम रनिंग अ कंपनी, आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनेंशियल साइड, but it does not mean that I'm going to compromise on my creatives, I'm going to compromise on my strategy. No, if I have said I will be strategic led value addition agency, I will actually deliver that, and through that I will earn. आपको अपनी टीम पे फेथ होना चाहिए। I rely on my team like crazy. If you as a CEO do not rely on your team, then rather not have a team. हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। CEO खुदा बन के बैठे हुए नाउजुबिल्ला, उनको ये हाल है कि उनकी आप शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। You have to come down from that throne. You have to sit and work with your team like a team member. I am a very strong believer of the fact that this needs to be an agency led. The agencies have to push back. The agencies have to fight, because अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कुछ अरसे के बाद एक छोटा सा वेंडर होंगे जिसके साथ क्लाइंट डिक्टेट करेगा, क्लाइंट चीजें बनवाएगा और आप बस बैठे हुए खाली काम फेल रहे होंगे। So you need to start that fight before it makes advertising agencies obsolete. That's what I feel. देखो, this is the reason का रोल। आई वाज सेइंग कि अब जो ये एक राइज आया है कि कंपनीज हैविंग देयर ओन इंटरनल क्रिएटिव डिपार्टमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इज द रीजन दिस इंटरनल क्रिएटिव डिपार्टमेंट हैज कम टू द होल सिनेरियो। A lot of agencies do not have any strategy department. उनका strategy department है ही नहीं, क्योंकि वो उसमें invest ही नहीं करते, because they think it's futile. Is there merit in conducting workshops for advertising agencies or clients to make them understand the importance of strategy? Yes, it's needed. It's badly needed.
क्योंकि देखो क्लाइंट साइड पे भी एक सबसे बड़ा डिलेमा है लैक ऑफ स्ट्रेटेजी का, और वो डिलेमा पता है कौन लाता है? वो लाता है सेल्स डिपार्टमेंट. There's a company, Mehran Spice. Their head of sales very categorically says advertising agencies are shit. I don't need any advertising when I can sell brand on my sales strategy. Why should I use an advertising agency for my communication? And at this point of time, I cannot fight with him because why? He's right. क्योंकि मार्केट सिनेरियो ऐसा है कि अगर वो सिर्फ अपनी वाइट पैनाफ्लेक्स के ऊपर अपनी ब्रांड लगाएगा और एक लाइन लिख देगा ना, तो भी उसकी ब्रांड बिक जाएगी. एंड द ब्रांड इज सेलिंग इन बिलियंस. There is a big gap of understanding and I still haven't figured out कि इसको किस तरह खत्म किया जाए. And that is exactly this, that how do you make clients understand that agencies are your value business partners. They are not your vendors. वो एक relationship के unfortunately power dynamics जो हर जगह होते हैं. I think ये mindset अगर change हो जाए ना, and it is just a word from vendor to business partner, and that will drastically change the way you work. That will drastically increase the amount of creative work that is done, amount of respect that there is, overall betterment के लिए. I don't know why लोगों को समझ नहीं आती. Actually, it's not one man's job. At this point of time, either All Pakistan Ad Association or Pakistan Advertising Society, they need to, get a spine. They're pansy as pieces of shit. उन्होंने क्या करना है? वो उठाते रहते हैं. मतलब उन्होंने आज तक क्या फूटा है यार? And there was one instance, I'll tell you, there was one instance जहाँ पे Pakistan Advertising Society actually got up 2011 जब गवर्नमेंट ने 17% एडिशनल GST लगाया था टीवी कमर्शियल्स के ऊपर, और बाय लॉ इट वाज एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेरी क्लियर दैट ब्रांड इज गोइंग टू पे फॉर इट, नॉट द. और जो क्या पता है 3 करोड़ का अगर ऐड बनेगा तो 3 करोड़ का 17% जो है वो आप लगा लें, फिर किसी की गाड़ी आ जाती है, अच्छी खासी फॉर्च्यूनर आ जाती है उसमें. वो क्लाइंट ने बहुत कन्वीनियंटली उठाया और उठा के कहा जी कि ये तो एजेंसी पे करेगी. और जब एजेंसी ने उसको अपने बिल में ऐड करके भेजा तो क्लाइंट ने कहा मैं तो ये पे ही नहीं करूंगा. उस पर फटा हुआ था. तो पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग सोसाइटी, दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस जहां वो लिटरली सारी एजेंसीज के फाइनेंस के हेड्स, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग सोसाइटी का बंदा एंड द क्लाइंट सर्विस के जो की पीपल हैं, दे वर इन दैट मीटिंग. और वो पूरी मीटिंग हुई थी जिस पे बैठ के ये डिसाइड किया गया था कि या तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर इस पे स्टे ऑर्डर दें, या एजेंसीज बहुत क्लियर है कि या हमने पे नहीं करना है या आपने पे करना है, फिर आप पे करना शुरू करें. So after that I left Pakistan, so I was not here, but I believe the thing that happened was probably stay order आ गया था इसके ऊपर. Funny how that's the only thing that they ever fought for. Unfortunately, yes. But there is one example, but yeah, we need to pick up our battles now, and we need to start working on that side, bhai. And we need to learn from India, yaar. India does remarkable job in advertising, and the way they do it, Piyush Pandey explained it very nicely. कि यार हम simple package बनाते हैं and we build the whole universe around it. Nobody does that. Inside पे universe बनाना is not that difficult. I don't know why people don't do it. Big idea पे universe build होता है, वो सबसे बड़ा problem है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से आधों को पीयूष पांडे का पता भी नहीं होगा. Oh yes, that is another fact. और आप में से जिनको नहीं पता, kindly please look up Piyush Pandey and look up his work and you will know who he is. He is one of the Betaj Badshah of advertising. Coming back to since you are perhaps the only KAMN admin that I will be interviewing, क्या सीन है KAMN का? कहाँ से आइडिया आया? This idea was initiated by Neil Christie, Khalid Alvi, and a couple of other professional seniors in the industry. Khalid's passion for creating a platform where people can get education. There are a couple of people who have been actively working since day one. I started Khalid Alvi as an admin since I think 6 or 7 years ago. The platform has very strict focus. कंटेंट जो हो वो लर्निंग इनेबल्ड हो और एट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रिगर करे थॉट प्रोसेस ताकि कुछ लोग सोचें. अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी भी देखते हो कि अगर हम कोई लर्निंग बेस्ड आर्टिकल डालते हैं तो उसमें 15 लाइक्स आती हैं और कोई कमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई चेपने का टॉपिक डाल दें तो उस पर 15 मिनट में 200 से 800 कमेंट भी चले जाते हैं एंड पीपल फाइट. बट द सैड पार्ट नाउ आई सी इज दैट खालिद अलवी के ऊपर हम एडमिन्स अब बहुत लेफ्ट राइट सेंटर जिन लोगों को बैन लगा रहे हैं, it's rather than advertising discussion have become a religious discussion spot, or at times feminism और anti-feminism वाली चीजें हैं, ये प्रॉब्लम आती जा रही है. And quite frankly, it's not the admins to be blamed. I will blame the audience
who is not talking relevant stuff. They are talking shit, and that is causing a lot of problem. That's why every Tom, Dick and Harry in the industry stand up and say, hey, Khalid Alvi पे कोई mutual discussion नहीं होती. तो मैं उसको ये कहता हूँ, भाई आजा तू कर ले. Why aren't you talking? If you're not talking and then you have that, you know, spine to stand up in front of me and say, hey, Khalid Alvi पे अच्छी discussion हो रही है, then fuck off यार. I'm very simple. तो मेरा एक जो disagreement है ना total situation से वो ये है कि then I think topics discussion होते हैं social उसकी चीजों के भी, and I think that is where the mistake has happened on the group is that I think that should be taken away. It just needs to be strictly marketing and advertising and sales. अगर आपने करने कर लें, एडमिन जो है वो कहते हैं जी हम तो सोशल, खालिद अलवी विल आल्सो डिस्कस सोशल इश्यूज एंड समथिंग, एक कोई स्टेटमेंट है आप लोगों की विजन पॉलिसी के अंदर कि हम उस पर भी डिस्कस करते हैं, और वो दुनिया का सबसे बड़ा चूतियापा है. एंड दिस आई एग्री विद यू, वो हमारे लोगों का मसला है, क्योंकि जब उसके अंदर सोशल इश्यूज पे तो हम बात नहीं कर सकते ना, या लेफ्ट है या राइट है, सेंटर वाला तो कोई है नहीं. सो इफ यू आस्क मी, आई थिंक दैट नीड्स टू बी टेकन अवे एंड इट शुड जस्ट be focusing on marketing. It's a good suggestion. I'll have a word with the fellow admins on this, but इसमें एक मैं तुम्हें चीज बताता हूँ. Understand the reason of keeping this. This gives consumer insights of how people think. This is a platform where you are getting a very on-ground understanding of how our consumers are thinking. Build on that. The problem is, again, since we are not strategic focused, we consider all that chaos as meaningless conversation. But if you start thinking from strategic angle, you will see perspective of how people think. Profiling बनना शुरू हो जाती है यार कस्टमर की उसके अंदर कि अच्छा अगर इस किस्म के प्रोफाइल के लोग हैं, हाँ ठीक है, that unfortunately that requires a bit of stalking at that point of time when you go and see the profile of a person कि इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसकी लुक, ये रहता कहाँ है, इसका बैकग्राउंड कहाँ से उठ के आ रहा है, जो कि आपको सोशल मीडिया के लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में पता लगना शुरू होता है. तो यू कैन क्रिएट सेफ पॉकेट्स ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ पीपल के अच्छा इस सेगमेंट के अंदर ये इस माइंडसेट का बंदा जो है उसका थॉट प्रोसेस यहाँ चलता है. इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंट मार्केटिंग यार. We lack intelligent people, तो marketing किस तरह होगी सर, यही तो मसला है. Sir, thank you very much for taking our time. It was a pleasure contacting. Final words. What do you think that I should be doing in the future? I remember, I think 2011 में जब ये conversation छिड़ी थी मेरे सामने, AdMed Dude का जिक्र आया था, and I said finally somebody is there to speak our heart out. We are not allowed to say things openly, and that's one fortunate thing that you are doing, and I respect you for that, and I will always respect you for that. तुम्हारे पेज पे बेकाऊ सीन कोई नहीं है, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट है, चीज अच्छी है तो अच्छी है, नहीं अच्छी तो नहीं अच्छी. Inshallah, sir, I will connect with you once again. Thank you very much for coming out and taking our time. Hopefully, you will be safe in the Corona time.